बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमिर स्कूल एंड कॉलेज गाजी। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 जो कि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के मुतालिक है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को हम डिफाइन करेंगे। तो पॉलिनोमियल इज बेसिकली इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of the variable is a positive whole number. Again, the power of the variable in the algebraic expression is a positive whole number. If it is a positive whole number, then the algebraic expression is a polynomial. For example, x square plus 5x plus 1 is a polynomial. Because here the power of x is 2, which is plus 2, here it is 1, and here it is 0. So if the power is 0, 1, 2, 3, and so on, then the algebraic expression is a polynomial. Otherwise, it will not be a polynomial. For example, 1 by x is not a polynomial. So polynomial के केस में आपने ये देखना है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और वहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है या उसकी पावर जो है वो नेगेटिव है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 by x या x पावर -2 जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह 1 by 3xy भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह x square plus 1 by 3xy अगेन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अंदर 1 by 3xy जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। तो पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो एक पॉजिटिव होल नंबर होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव होल नंबर नहीं है, या दूसरी अल्फाज में कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है और उसका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है या उसकी जो पावर है वो माइनस है, भी नेगेटिव है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इन दिस केस ये एग्जांपल जो है पॉलिनोमियल की है, और ये जो एग्जांपल्स हैं तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स थ्री मेन टाइप्स। मोनोनोमियल, having only one term. So mononomial is a polynomial with one term. For example, 5 is a mononomial. X is a mononomial. X square y is a mononomial. So if there is only one term, then the expression is a mononomial. 7x square y z cube. Again, there is only one term. Look here, 3 terms. 1, 2, 3. All terms are added together using a positive sign, using a summation sign, using a plus sign. So these are 3 terms. But here 1, 2, 3, 4. This
these are not four terms because there is no positive, no addition sign or no subtraction sign is included. If there is a plus sign or negative sign, then the number of terms increases. Otherwise, the term will remain the same. टर्म एक ही होगी. अगर टर्म के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आ रहा है तो वो टर्म जो होंगी वो एक से ज़्यादा हो जाएंगी. लेकिन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, उनके साथ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई हुआ हो, उनके बिटवीन कोई अगर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं आ रहा तो वो सिर्फ एक ही टर्म रहेगी. जैसे कि इस केस में ये एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है, ये भी एक ही टर्म है और ये भी एक टर्म है. सो a polynomial having only one term is a mononomial. Next type, binomial. Bi mean two, bi mean two, mono mean one, and bi mean two. So a polynomial having only two terms is a binomial. For example, x square plus 5 is a binomial. Y minus 2 is a binomial. X square y plus 3 is a binomial. तो अगेन याद रखना है कि ये नहीं काउंट करना है यहाँ पर कि 1 2 3 4 टर्म्स है यहाँ पर. नो, टर्म जो हैं उसमें आपको टर्म उस वक्त कम बढ़ रही होंगी जबकि दो टर्म के दरमियान प्लस या नेगेटिव का साइन आएगा. तो यहाँ पर प्लस का साइन तो आ रहा है लेकिन टर्म सिर्फ कितनी है, दो है. So a binomial is a polynomial having only two terms. So this is a binomial. Mononomial. Tri. Last type is trinomial. Last term is trinomial. Tri means three. Tri means three. So a polynomial having how many terms? Having three terms is a trinomial. Like in this case, this algebraic expression is a polynomial with three terms. So this is a trinomial. Example, having only three terms. Examples, x square plus y plus z, or x square plus 2xy plus 6. So a binomial with three terms is a trinomial. So a polynomial having three terms is a trinomial. अब हमने पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करने के बाद हमने कुछ एग्जांपल करनी है. फॉर एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें हमें ए बी सी डी जो है वो 4 जो है एग्जांपल दी गई हैं. इनमें हमने ये फैसला करना है क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं. अगर वो पॉलिनॉमियल हुआ तो वो क्या मोनोनॉमियल है, बाइनॉमियल है या ट्राइनॉमियल है. अब एक बात याद रखने की है, सवाल ये हो सकता है कि
अगर एक टर्म है तो वो मोनोनॉमियल है, दो टर्म है तो बाइनॉमियल है, तीन टर्म है तो वो ट्राइनॉमियल है। तो क्या होगा अगर टर्म जो हैं वो तीन से ज़्यादा हैं तो उसका क्या नाम होगा? तो अभी तक इस तरह की एक्सप्रेशन को कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया। तो अगर आप इन एग्जांपल में देखें तो पहली एग्जांपल जो है वो 2x माइनस 3xy है, 3y है। डिसीजन ये करना है कि क्या ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 1 और z की पावर 1, सो 1 + 1 टोटल जो पावर बनती है 2। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ जो पावर बनती है वेरिएबल की 1, एक टर्म की जो पावर है वो 1 है और दूसरी की 2 है, और ये पॉजिटिव होल नंबर है, तो इस वजह से ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये आपकी पॉलिनॉमियल है। क्या पॉलिनॉमियल है कि नहीं? तो डिसीजन हमारा हुआ कि ये पॉलिनॉमियल है। और इस पॉलिनॉमियल में टाइप इसकी कौन सी बनती है, क्योंकि यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं टोटल टर्म्स 1 2, so total number of terms are 2, so this is a binomial. Next expression is 8n cube plus 5n minus 2. Look at this equation. Here the value of n is 3, which is positive, but what about this? Here the value of the power of n is minus 2, which is not positive whole number, so this is not a polynomial. Because it is not a polynomial, so it cannot be categorized as a mononomial, binomial, or trinomial. Next example is minus 8. Minus 8 is there is only one term, that is minus 8. Minus 8 can be written as minus 8 x power 0. So power of the variable is 0. And I told you, if the power of a variable is 0, 1, 2, 3, etc., then the polynomial, then the expression will be a polynomial. So in this case, minus 8 is a polynomial. So constant is always a polynomial. A constant number is always a polynomial. Minus 8 is a polynomial, 5 is a polynomial, 3 is a polynomial, 1 is polynomial, 5 is polynomial, 8 is polynomial. So plus 8 is polynomial, minus 8 is polynomial. So polynomial, constant numbers are always polynomial. And what about the category of the polynomial? The category of this polynomial is simply this is a mononomial. Yes, this is a polynomial and within the polynomial this expression having only one term, so it is a polynomial. So simply remember, if there is a constant 1, 2, 3, 4 or minus 5, 2, 3, minus 6, minus 7, etc., then the constant are always a polynomial, that is a mononomial. अब हमने देखना है कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, डिग्री क्या होगी? Degree of a polynomial, if we consider a polynomial, then the highest power of the variable involved in the expression, highest power, maximum power of the variable or variables in an expression
is the degree. Degree is basically the highest power. For example, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं जो कि बाइनॉमियल है, इसमें यहाँ पे जो पावर है वो x की पावर 1 है, इस टर्म की जो पावर है वो 1 है। यहाँ पर हम देखते हैं तो y की पावर 1 है और g की पावर भी 1 है। तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री बन रही है वो 1 प्लस 1, जो पावर बन रही है वो 2 बन रही है। यहाँ पर इसकी जो पावर है वो 1 है और यहाँ पर टोटल जो पावर बनती है वो बनती है 1 प्लस 1 2। तो मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनॉमियल is the degree of the polynomial. So in this case, the degree of the polynomial is 2. Here the degree of the polynomial is 0. Degree of the polynomial. No variable is there. When there is no variable, there is only a constant, then the degree of the polynomial is 0. The degree of the polynomial, for example, x cube plus 3x square y g plus 5 again is a polynomial. In this polynomial, the degree of the power of x is 3, where here the power of x is 2, power of y is 1, power of g is 1, so 2 plus 1 plus 1, total 4. So maximum power of the variables in this expression is 4. So the degree of this polynomial is 4. मैं कह रहा हूँ कि इसमें अगर देखें तो x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, g की पावर 1 है, 2 प्लस 1 प्लस 1 4। यहाँ पर x या y मौजूद ही नहीं है, यहाँ पर जो है इसकी जो पावर बनती है वेरिएबल की वो 0 है। तो डेफिनेशन ये कहती है कि मैक्सिमम पावर, डेफिनेशन क्या कहती है, मैक्सिमम पावर ऑफ अ पॉलिनॉमियल इज द डिग्री ऑफ द polynomial. Maximum power of a variable in a polynomial is the degree of the polynomial. So in this case the degree of the polynomial is 4. In this case the degree of the polynomial is 2. अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें x square y z, the degree is 2 plus 1 plus 1 4. Degree is 4. This is a monomial, but its degree is 4. So hopefully की डिग्री आप स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुकी होगी। स्टूडेंट्स, कुछ पॉलिनॉमियल ऐसे हैं जिनके कुछ स्पेशल नाम दिए गए हैं। वो नाम क्या है? लीनियर पॉलिनॉमियल। One is linear, second is quadratic, third is cubic, and fourth is biquadratic. तो हमने एक्सप्लेन करना है कि पॉलिनॉमियल में जब पॉलिनॉमियल आपके पास आ जाए उस पॉलिनॉमियल को डिग्री को देखते हुए, पहले हमने क्या किया था, डिफरेंट टाइप्स पॉलिनॉमियल की हमने एक्सप्लेन की थी, लेकिन वहाँ पे टर्म्स को देखते हुए हमने एक्सप्लेन की थी। अब हमने डिग्री को देखना है और डिग्री को देखते हुए हमने डिसीजन करना है कि वो जो एक्सप्रेशन हैं वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। तो मैं ये फ़र्क, आपने डिफरेंस याद रखना है। आपका एक सवाल हो सकता है कि हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो पॉलिनॉमियल्स हैं उनकी टाइप जो थी
वो मोनोनामियल, बाइनामियल और ट्राइनामियल ऑलरेडी हो चुकी थी, तो अब नया क्या आ गया है। तो ये बात याद रखने की है कि वहाँ पे हमने नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट किया था, अब हमने डिग्री देखनी है, पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी है। तो अगर टर्म्स को काउंट करके हम उसको नाम जब दे रहे थे तो मोनोनामियल, बाइनामियल और ट्राइनामियल थी, लेकिन अब हम टर्म्स को नहीं देख रहे, अब हम डिग्री को देख रहे हैं। तो डिग्री को देखते हुए टाइप्स ऑफ polynomial with respect to their degree। तो जो शुरू में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ polynomial with respect to the number of terms in the polynomial था। तो ये दोनों मैं उम्मीद रखूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स इस बात को याद रखेंगे कि जब हमने मोनोनामियल, बाइनामियल और ट्राइनामियल तीन नाम दिए थे पॉलिनोमियल को, तो वहाँ पे हमने टर्म्स के को सामने रखते हुए दिए थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो है डिग्री को देखते हुए फैसला कर रहे हैं। तो लीनियर एक्सप्रेशन वो होगी हैविंग whose degree is 1, quadratic whose degree is 2, cubic, cube mean 3, quad mean 2, quadratic is a polynomial with degree 1. Quadratic is a polynomial with degree 2. Cubic is a polynomial whose degree is 3. And bi mean 2 and quad mean 2. 2 into 2, 4. So biquadratic is a polynomial with degree 4. Look here. So the types of polynomials with respect to their degrees are linear, a polynomial with degree equal to 1, quadratic, a polynomial with degree equal to 2, cubic is a polynomial with degree equal to 3, and biquadratic is a polynomial with degree equal to 4. Examples: linear, degree is 1. Degree is the highest power of the variable. Here the variable is x. The highest power of x is 1. It's a quadratic because the highest power of x is x square. I mean is 2. Xy plus 3 is again a quadratic equation, but quadratic equation in two variables. 1, 1. Cubic expression with degree equal to 3. So expression with degree equal to 3, like x cube plus 5 is a cubic equation. X square y plus 5 plus 6x is again a cubic equation. Degree of the polynomial is 2 plus 1 is 3. X, y, z plus 3 is again a cubic equation. The degree is 1 plus 1 plus 1 is 3. So look here, this is a cubic equation in one variable, that is, the variable is x. This is again a cubic expression or cubic polynomial in two variables.
but this is in two variables. The variables are x and y. This is a cubic expression in three variables. Biquadratic x4 plus 5 is biquadratic. X square y square plus 5 is biquadratic. X y square z plus 6 is biquadratic. तो हमने पढ़ा क्या? हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल को डिफाइन किया, फिर हमने पॉलिनोमियल की टाइप विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, फिर हमने डिग्री को डिफाइन किया, फिर हमने टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू देयर डिग्री को हमने एक्सप्लेन किया। अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सरसाइज 5.1 जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब जबकि हम पॉलिनोमियल को टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ टर्म्स, फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल और फिर टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को रिवाइज करने के बाद इस काबिल होंगे कि ये वाली एक्सरसाइज 5.1 जो है इजीली सॉल्व कर लें। मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सेपरेट करना है द फॉलोइंग इनटू मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे हमने क्या चीज काउंट करनी है? नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल 15 y plus 2, 14b square, 2a plus y, 1 by 2x plus 2 by 3y plus 5, 3x plus 4y plus z। इनमें हमने ये डिसीजन करना है कि इनमें से कौन सी टर्म ऐसी हैं जो मोनोनोमियल हैं, कौन सी बाइनोमियल हैं और कौन सी ट्राइनोमियल हैं। So number of terms, only one term is a mononomial, one term mononomial, two terms binomial, two terms binomial, three terms 1 2 3, three terms trinomial 1 2 3, three terms trinomial. Question number 1. Then question number 2, write the degree of the following polynomial. Write the degree of the following polynomial. For example, 8xy, 2x square y cube, 6x cube, 7y 5z 6. In this polynomial, in this expression, the degree is degree. What is degree? Again, degree is the maximum power of the variable or variables in an expression. So इस expression में अगर आप देखें तो दो variables हैं x और y, और x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो 1 plus 1 2. So degree of the polynomial in this expression is 2. अगेन दो वेरिएबल्स हैं x और y, x की पावर 2, y की पावर 3, 2 plus 3 5, so डिग्री है 5. अगेन इस एक्सप्रेशन को देखते हुए आपने देखना है कि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल्स इन एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे तो एक टर्म थी, इनको हमने इकट्ठा कर लिया था, लेकिन यहाँ पे टर्म
जो है वो 3 है। यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 5, y की पावर 5 है और यहाँ पे g की पावर 6 है। तो यहाँ पे ये नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता 6x³ 7y 5z6, तो फिर तो चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इस केस में पावर को हमने ऐड करना था। 3 + 5 + 6 14 डिग्री होती, लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, सेपरेट टर्म्स है। टर्म कितनी है? 3, 1 2 3। हर टर्म की आप डिग्री देखेंगे और जिस टर्म की हर टर्म की आप पावर देखेंगे और जिस टर्म की पावर ज्यादा होगी वही उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर इस टर्म की पावर 3 है, इस टर्म की पावर 5 है, इस टर्म की पावर 6 है, तो इस लिहाज से इसकी जो डिग्री है वो है 6। सो इन दिस केस द डिग्री इज 6। लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहां पे आपने मैच करना है। मैच द फॉलोइंग बेसिकली आपने को जो एक्सप्रेशन दी गई हैं उनको आपने डिसाइड करना है वेदर ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, क्यूबिक है या बाई क्वाड्रेटिक है। तो आपने सिंपली डिग्री देखनी है। डिग्री अगर 1 हुई तो लीनियर, डिग्री अगर 2 हुई तो क्वाड्रेटिक, अगर डिग्री अगर 3 हुई तो वो क्यूबिक, और अगर डिग्री 4 हुई तो वो बाय क्वाड्रेटिक होगी। तो आप स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट होगी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये नोट्स भी आपको इसके साथ फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने शुरू की जो डेफिनेशन है उनको लिखना है। उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आएंगे, एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। जो एक्सरसाइज है वो भी आपको सॉल्व फॉर्म में भेजी जा रही होगी। तो आपने करना ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम आए तो तब आप उस सोल्यूशन को देखें, अदरवाइज आप तमाम क्वेश्चन मीन एक्सरसाइज 5.1 जो है आप खुद करेंगे। तो आज आपका काम जो है एक्सरसाइज 5.1 है। अल्लाह हाफिज़।